बहस है उसमें भी करें, आप अनावश्यक भी नहीं करें। मैं अनावश्यक नहीं है। पहले आपका कहना है कि आप विक्टिम हैं, अगर आप विक्टिम हैं आपको एंटाइटलमेंट है। Second, I have given the copy. Who was the victim? Madam, please see the who. मान ली विक्टिम, मान ली भाई, आप क्यों मना कर रहे हैं भाई? अगर आपने इन्वेस्ट किया तो विक्टिम है आप। Right, madam. I will say on the order of the Supreme Court, madam. I will say. फिर वो या तो आप समझना नहीं चाहते। Should consult with the Chief Justice in this matter. फिर बात होगी। No, because in the larger public interest, madam. And then because it is to be seen in the larger public interest, madam. What is the definition of the victim? डेफिनेशन नहीं है। Whether we are covered. Yes. आप अपने consistent है। I will shortly put 3-4 points before the lordship. Number one, why the objector is before the lordship. Why की नहीं, आपको एंटाइटलमेंट है वो आप। Yes, I will clarify it. केवल आप वहाँ पर सीमित रखें कि आपको एंटाइटलमेंट सुने जाने का है। Entitlement is यहाँ पे बता। yes. I am telling. If please see the intervention application first. So पेज नंबर that is on that is IA number 33249. उसमें बता कौन से पैरा में आपका। Yes, madam. Now please see. First, I want to bring the attention of the lordship on the annexures, which are very relevant here. No, my lord. It cannot be argued shortly. शॉर्ट आप पूरे दिन करें। No. I'm not saying that. शॉर्टली बात But see, what मेरा ये कहना है कि आप उस पर बताएं आपको एंटाइटलमेंट है। yes, my lord. I am entitlement because I am one of the victim. Number one. विक्टिम क्या था वो बता दो। Victim because we have also invested the amount. I have said my intervention application. Number one. Second, in this matter, when there is a financial scam and the state is saying, my lord, I am not. आपने इन्वेस्ट किया इसका क्या डॉक्यूमेंट? I want to, my lord, address the lordship. अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आप भी विक्टिम में मान लेंगे, सीधी बात है। आपका स्टार्टिंग है कि यू हैव इन्वेस्टेड इन द फर्म, ठीक है, तो आपने इन्वेस्ट किया उसका पता है डॉक्यूमेंट। My lord, we have not filed a document here, but I have said. फिर बात हो गई यही सर, आपने आपका फर्स्ट लाइन आर्गुमेंट है कि यू हैव इन्वेस्टेड इन द फर्म। No, there are two aspects of this argument. Number one, I am invested. Number two, my lord, please. एक करे चलो, इन्वेस्ट किया तो उसका डॉक्यूमेंट क्या है? Yes, madam. That the facts is on record, my lord. But डॉक्यूमेंट बता नहीं भाई इन्वेस्ट किया। my lord, in para one, I have said the intervener objector is a conscious citizen who have also invested the money in the society, which is the application accused by paying import. Yes. तो किसी अगर हम शेयर लिख दें तो ऐसा हुआ तो फिर डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट जरूरत है। तो आपने इन्वेस्ट किया है इसमें जिससे भी केस रिलेटेड है, उसका डॉक्यूमेंट क्या है? I have not submitted the FDR, but since from the beginning 2021, the accused who has filed this PIL, he on the basis of that, the honorable DB has taken the cognizance of the matter and the PIL was admitted and it was instructed to the state. जो बहस है उसमें भी करें, आप अनावश्यक भी नहीं करें। मैं अनावश्यक नहीं है। पहले आपका कहना है कि आप विक्टिम हैं, अगर आप विक्टिम हैं आपको एंटाइटलमेंट है। Second, I have submitted yes, I have given the copy. Who was the victim? Madam, please see the who. मान ली विक्टिम, मान ली भाई, आप क्यों मना कर रहे हैं भाई? अगर आपने इन्वेस्ट किया तो विक्टिम है आप। Right, no. If I have not invested, even we are the victim. नहीं, दोनों आर्गुमेंट नहीं होता, ऐसा नहीं तो ऐसा। नहीं, that's why बात हो गई। आपने इन्वेस्ट किया इसका पहले डॉक्यूमेंट बताएं, अगर नहीं है तो सेकंड आस्पेक्ट देखेंगे कि बिना इन्वेस्टमेंट के भी आप विक्टिम हो सकते हैं। Right now, I have said in the petition, but I have not submitted the document. तो इतना पर्याप्त है क्या कि आपने इन्वेस्ट किया? It may be submitted. It may be submitted क्या होता है? आपको टाइम मिला 15 दिन का। It may be submitted because the petition, all the facts were the part of the petition, and my lord, that's why I am saying, my lord. Now, my lord, please see the conduct of the accused, my lord. Why? कंडक्ट नहीं है, आपका बताना कि आपको कैसा एंटाइटलमेंट है, उनका कंडक्ट गलत हो। I have said. आप उनका बिल्कुल गलत हो, आपको बताना कि आपको कैसा एंटाइटलमेंट है। No, my lord. In this case, when the matter is financial scam, it cannot be said through the limited aspect by the lordship that you are the only victim when you have invested the money. No. You started an argument. Yes. That I have invested the money. Yes, I have said that, and I have not submitted my FDR. I will submit the document FDR, my lord, but I have not submitted that. But now the rest of the things. Now I want to bring. Why this bail is to be kept? My lord, it is not appropriate. बात तो सुनो भाई, आप सेकंड आपने बताया कि आप किस आधार पर विक्टिम हैं। Right. बताएं। Now, please see the annexure on page number 20, my lord, of my application. When the first FIR was lodged in the year 2020 on page number 11.
I1. This was the first FIR. If this FIR could not have, my lord, the quest by the High Court on the assumption that there is a compromise between the parties. In such cases, the compounding and compromise cannot be done. I will say on the order of the Supreme Court. I will say. फिर वो या तो आप समझना नहीं चाहते, हम मेरिट पे भी सुन ही नहीं रहे भाई। पहले आप ये बताएं आपका एंटाइटलमेंट है। My lord, it is to be heard on the merit. नहीं, मेरिट बाद में सुनेंगे ना, सेकंड पार्ट में। पहले आपको पता है एंटाइटलमेंट है, अगर आपको एंटाइटलमेंट है तो क्यों सुनेंगे मेरिट बात? आपको एंटाइटलमेंट है तो मेरिट पे क्यों सुनेंगे भैया? So it is the order of the Supreme Court, my lord. It may be seen that. बता क्या है? Yes, my lord. See page number 20, my lord. बता भाई आपको एंटाइटलमेंट। When the petition was quashed, the state has approached to the SLP. Page number 20, my lord. Page number 20, my lord. It is the order of the Supreme Court. See, please, what they have stated. When the state has moved in the Supreme Court and against the order of the compounding of the question. But see, we are not in. आप एंटाइटलमेंट सेकंड एस्पेक्ट बताओ कैसा आपको? Yes, my lord. We are. Please see the order, my lord. हमने देख लिया। Bas. We are not inclined to interfere with the impute order. It would not come into the way. Third person, who is not party in the compromise, may making a police complaint or even otherwise, the police can register first information report on any of the information in accordance with the law. Now, Malos, please see the complaint filed by us, Malo. कौन सी कंप्लेंट फाइल की आपने? That is a page number 32, Malo. It is an accumulated complaint by a lot of persons, Malo. Please see the page number 32. आपका कहना थर्ड पार्टी कंप्लेंट पेश कर सकती है, क्या ना? In this case, all the investors. सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आप यही रेफर कर रहे हैं ना, थर्ड पार्टी कर सकती है कंप्लेंट? Yes, my lord. Yes. Anybody who is affected. Victim, who is a victim? Anybody. तो affected है? Yes. Affected है? Who is affected? Who is affected by this conduct of the accused, my lord? In this financial scam, anybody may approach to the lordship also. And my lord, this aspect is not to be seen in the context of bail only. This is to be seen in the larger interest of the public, my lord. Now, multiply see annexure I5, my lord. लार्जर इंटर पे PIL में चला जाएगा। No, not PIL. Even then, in the case of Vyapam, in the case, I am telling my lord why this case can be covered by the lordship. In the case of Vyapam, Honorable High Court has taken the cognizance and the bail was not granted till the challan was not submitted. My submission is that when the main accused is, my lord, बाद में सुनेंगे। yes, it is part of my argument. When the main accused are not arrested till date, when the prosecution agency is. भाई आप अपना आर्गुमेंट पहले उस पे करें स्टैंडिंग पे। Yes, my lord. आर्गुमेंट। Yes, my lord. My lord, please see page number 32. पेज नंबर 32, annexure I5. Is a detailed complaint against all the accused, and the accused brother name is also in there. Vinod is a इनके किनका ब्रदर है? जो जिसने बेल लगाई है, my lord, विनोद तिवारी का जो ब्रदर है वो he was a main accused in that case. और आप समझने पे बनाओ तो टाइम खराब कर रहे हैं। नहीं, टाइम नहीं खराब कर रहा। आप उसके बता पहले भाई आप थोड़ा सा उसको आर्गुमेंट सेकंड पार्ट में सुनेंगे। मेरिट पे प्लीज गो थ्रू दिस एप्लीकेशन। मेरिट पे सेकंड पार्ट में सुनेंगे, पहले आप हमें अपना बताएं। इससे क्या साबित हो रहा आपका? इससे साबित हो रहा है कि इस स्कैम में जो लोग उन्होंने एप्लीकेशन दी है। भाई आप अपना बताएं, स्कैम बाद में समझ बार-बार यही पहुंच रहे हैं आप। My lord, this is the third party complaints. We are involved in that because we are the first investor. Then we investor तो आपने डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया, नहीं मानेंगे इन्वेस्टर आप। My lord, I will submit. आप फिर सबमिट कर 15 दिन मिल गए आपको? My lord, no, I मिले ना आपको? I felt that it is not required in this case. कितने डॉक्यूमेंट आइए फाइल किए हैं, तो इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट क्यों नहीं फाइल किए? हमने इन्वेस्ट किया है, ये बेसिक ग्राउंड था आपका कि विक्टिम आप हैं कि नहीं, तो आपको फाइल करना चाहिए। My lord, the victim is to be seen in the context of the merits, my lord. हाँ, merits in the context of the case. हाँ, context of the case देखेंगे ना। Yes. आप किसी in the context of the case. आप कैसे प्रभावित हो रहे हैं बता दें। Yes. So, I am saying, my lord, that's I have my computer, my lord. Now I am coming on other points. That these complaints are filed by other persons. अदर पॉइंट क्या हो रहा है भाई, समझ नहीं आ बार-बार। My lord, आपने पहले बताया कि हम इन्वेस्ट किया है, डॉक्यूमेंट नहीं इन्वेस्टमेंट्स के। सेकंड पार्ट आप बता नहीं रहे कि क्या है। आप थर्ड पार्टी तो अफेक्टेड कैसे हैं आप, ये बताएं। my lord, we see the definition of victim, my lord. So देखिए ना विक्टिम, देखिए। Please see section 2, my lord. Victim means person who has suffered or any loss or injury caused by reason of the act or omission for which the accused persons have been charged, and the expression victim includes his or her guardian or legal heirs. Now,
Now, my lord, please come the interpretation of the Supreme Court of the victim, my lord. I am referring, my lord, AIR SC 4843, my lord, 2007. Now, my lord, I am coming on para number 9. This is the relevant portion, and para number 9 has explained clearly the victim and the CRPC. On the other hand, learned counsel appearing on behalf of the state has supported judgment of the High Court. Learned counsel emphasized the circumstances which weighed with the High Court, including one, the seriousness of the allegations, two, the conduct of the appellants. So the victim is in serious. Yes, my lord. Yes, ma'am. The conduct of the appellants who were absconding, the criminal antecedents of the appellants. Hence, it was argued that the appellants were not entitled to relief or quashing of the FIR merely because they had entered into a settlement with the complainant. बेसिक फैक्ट ये होता है कि इसमें जो आपका EIR 2017 है, इसमें विक्टिम कौन था, उसका केस से क्या रिलेशन था? इसमें भी यही हुआ था कि इसमें क्या हुआ, इसमें रिलेशन ये था, my lord. किस सेक्शन का ऑफेंस? Yes, my lord. Now, क्या सेक्शन है? the under section 384, 467, 468, 471. 384, 384, 467, 468, 471, and 120B and 506 of the 2. विक्टिम का इनसे क्या रिलेशन? And the brief was that then there was a scam of the land, and land was by the manipulated documents, the land was taken by them. So when the compounding was it was argued before the Supreme Court that compounding is to be done, and they are the compoundable section, then it is Apex Court said that no, when the person are affected and they are the victim, they cannot be, this matter cannot be compounding, my lord. So they have explained this. Now I am reading this paragraph. The criminal antecedents, now if you see, section 482 is preferred with an overriding provision. The statute saves the inherent power of the High Court as a superior court to make such orders as necessary. Number one, to prevent an abuse of process. It is whole impetus here. Abuse of process of any court. Otherwise, to secure the ends of justice. In Gyan Singh AIR 2012. ज्ञान सिंह वगैरह उससे रिलेटेड है, कंपाउंडिंग कब हो सकती है, कब नहीं हो सकती है? Now I'm coming on that 61 para. On the para 61, my lord. विक्टिम वाला बताओ ना, विक्टिम बताओ. Power High Court, yes, my lord. My lord, it may be taken, my lord. तो बताओ. The power of the High Court in questioning the criminal proceedings of FIR, complaint and exercise of its inherent jurisdiction, 61. distinct, yes, 61 of that continuation in para 9, in para 10, my lord. In para 10, the paragraph, it is quoted of another judgment, my lord. The power of the High Court in questioning a criminal proceeding or FIR, complaint and exercise of its inherent jurisdiction is distinct and different from power given to a criminal court for compounding the offences. Under section, no, why I am saying this? They have explained the victim in this, my lord. I am coming on that. Now, in what cases power to quash the criminal proceedings to complaint? Yes, coming BX, my lord. They have explained the victim in this. Victim बता रहे हैं कि कब power quash होगी, वो अलग चीज है भाई. In what cases power to quash the criminal proceedings or complaint FIR may be exercised, where the offender and the victim have settled their dispute would depend on the facts. I am coming on that, and circumstances of each case, and no category can be prescribed. However, before exercising such power, the High Court must have due regard to the nature and gravity of the crime. कोर्ट से डिस्कस करें कि क्वेश्चन कब होगी. Right, my lord. Right. क्वेश्चन का मैटर नहीं है, विक्टिम की डेफिनेशन है. If the bail is granted, then what will happen? बेल क्या भी छोड़ो, बेल ग्रांट होगी नहीं होगी क्या तो मालूम. Right. हमारे पास से बहस सुनने का टाइम नहीं है. आपको So, my lord, this judgment is की डेफिनेशन पता है कहाँ आपने बताया कितने पौने घंटे बाद से, तो कौन से पैरा में? It is not clearly defined. तो But they have explained the victims. कहाँ विक्टिम एक्सप्लेन किया है? चलिए एक्सप्लेन मैंने पूरा पैरा 61 में उन्होंने समझाया हुआ है. कहाँ समझा? हमें समझ में नहीं आ रहा, आपके समझ में आ रहा तो बताएं. पूरा केस उस पे है, क्वेश्चन पर कंपाउंडिंग पर आप उसमें विक्टिम को डिफाइन कर रहे हैं. Quashing is a secondary portion. The quashing is secondary. आप विक्टिम में कौन है बताओ, कहाँ किस पैरा में लिखा आप घंटे का तो पढ़ रहे हैं उसको कैसे सत्रह को. Should consult with the Chief Justice in this matter. फिर बात होगी. No, because in the larger public interest, my lord. And then because it is to be seen in the larger public interest, my lord. It is to be seen in the larger public interest. It is not a victim. I am not the only person who is affected by this, my lord. Why the matter is not to be heard when I am saying, my lord, writ appeal and writ petition both are pending before the DP, my lord.
So my High Court rules do not permit. अरे फिर वही हाई कोर्ट में जब जगह My lord, High Court rules do not permit that if I am submitting the case, that if the letter is to be, my lord, it is to शाम be पे रखिए, seen. अब आपके अगर इन्वेस्टमेंट का मैं शाम को लाके दे दूँ Right. बस, और बाकी कोई ग्राउंड नहीं है आपका, और कोई लॉ है तो बता दें कि लार्जर इंटरेस्ट जो तब सब लार्जर It may be kept tomorrow, my lord. टुमारो नहीं रखेंगे. Tomorrow I will submit today the FDR and the victims more elaborate definition for. मोर एलोरेट क्या होता है, 2 घंटे खराब कर दिया, 2 घंटे. But वैसे इतना sufficient है, my lord. जो definition W में दी गई है, it is sufficient for the victim. ऑर्डर लिखा दे तो चलिए, It is a sufficient. ऑर्डर लिखा दे सफिशिएंट. No, but I'm submitting the FDR. अगर साहब 7 ऑटो में लेकर घूम रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? कोर्ट का टाइम खराब किया आपने. My lord, कोर्ट का टाइम. कागज पढ़ना नहीं आता क्या? My lord, yes, my lord. कागज पढ़ना नहीं आता क्या? आप पढ़ना आता है. आप ये बताइए, my lord, कि मैं आपके साथ. अरे आपको कहाँ आया हूँ और मैं one of the victims. पब्लिक इंटरेस्ट है तो पब्लिक इंटरेस्ट में जाओ.